स्वागत है इस डिस्कशन में। This question: what does a seismograph record? Right? It's the earthquake, seismic waves. So the answer is C. Next question: match list 1 with list 2 and select the correct answer from the codes given below. See here. हम बात करते हैं जैसे हम एनीमोमीटर एनीमोमीटर का संबंध क्या है किससे? विंड वेलोसिटी से, राइट। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी से है। बैरोग्राफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रिमेंबर, and seismograph this earthquake. So this is how you can get the correct match. Now come to this question. Match list 1 with list 2 and select the correct answer. You can see here earthquake. This measures seismic waves, height, altimeter, electric current, ammeter, and resistance ohm. Now come to this question. Which one of the following is not correctly matched? Correctly matched कौन नहीं है, इसे देखना है। देखने से पता चलता है कि seismometer का संबंध जो होता है to measure the seismic waves during the earthquake, और manometer pressure, carburetor it mixes with the fuel and the air in the internal combustion engine. Cartograph is the record of the mechanical movement of the earth. So this seismometer curvature of the surface is not correctly matched. So right response is T. Come to this question. Match the character. C. Fathometer. Fathometer is related to the measurement of the depth of the sea. Barometer, atmospheric pressure. Hygrometer, atmospheric humidity, presence of the water vapor in a given volume of air. Altimeter is related to the height. Now come to this question. Phanometer is used to measure which one of the following, right? In fact, a phanometer is a device meant to test the force of the human voice in speaking, right? And photometer is related to the measurement of intensity of a light. So हम इसमें देखेंगे कि phonometer है, then none of the options is correct. Then come to this. Fathometer is used to measure depth of the sea. So the right response is C as per the need of the question. अब हम देखते हैं फिर this question. The apparatus used for detecting a lie is known as, it's the polygraph, right? जो पैरोमीटर जानते हैं, it's meant to measure the so-called the pyrometer high temperature.
So on this question, the instrument used for measuring angular distances in vertical plane, that is elevation, and the horizontal plane azimuth, is right response is theodolite. State question आप remember कर लीजिएगा. What is the function of the theodolite? Now this one, consider the following actions. See here, the detection of car crash, that is the collision, which results in the deployment of airbags almost instantaneously. इसको ध्यान से स्टेटमेंट को सुनेंगे आप और देखेंगे. सेकेंड स्टेटमेंट है डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल, दिस वन, detection of accidental free fall of a laptop towards the ground, which results in the immediate churning of the hard drive. And the third statement, detections of the tilt of the smartphone, which results in the rotation of display between portrait and landscape mode. इसमें आपके जो हैं ऑप्शन दिया गया है, in which many of the above actions is a function of accelerometer. Remember accelerometer. All the three functions तीनों इसमें होंगे. Okay. So look at this question. A simple machine helps a person in doing, ये state questions है, the same amount of work with lesser force. This is the right response, B, right? Come to this question. Which of the following is a scalar quantity? अदिश राशि कौन है? Force vector है, प्रेशर आपका स्केलर है, एक्सलेरेशन भी जो क्या है वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर. दैट इज ऑल द थ्री क्वांटिटीज. Force, velocity and acceleration are the vector quantities. So the only option left is B, which is the scalar one. Pressure, remember, pressure is a scalar quantity. A man is standing on a sensitive balance. If he inhales deeply, the reading of the balance definitely increase कर जाएगा ये. So right response A होगा, क्योंकि एयर जब इनहेल होगा तो आपका क्या होगा, मास बढ़ेगा ये. आइए, come to this 7. Which one of the following is a vector quantity? So vector निकालना है आपको. तो मोमेंटम क्या है? Mass into velocity is a vector quantity, right? Pressure, it is the force by area, a scalar. Work, this is the force into distance, it's a scalar. Energy, maybe kinetic, maybe potential, it's also the so-called the unit of the work, obviously force into distance. So the all the three quantities see here, pressure, energy and work are scalars. Only vector is momentum. So the right response is A. Okay. Now look at this question. Which physical quantity is represented by the ratio of momentum and velocity of the body? ठीक है, यानी क्या है आपका which of the following quantities is represented by the ratio of the momentum and
वेलोसिटी, राइट। मतलब हमें कि मोमेंटम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी देखना है। ओके, अब देखिए ये एक्चुअली क्या है, ये जो मोमेंटम होता है ये हमारा, इसके लिए पी हम सिंबल दे देते हैं, राइट। तो पी जो होता है हमारा वह मास इंटू वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है कि मोमेंटम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी करना है। मतलब क्या हुआ, एम डिवाइडेड बाई वी करना है। तो वी भी कट जाएगा, बचेगा क्या, एम। याद रखिएगा, राइट रेस्पॉन्स इज मास, सी। लुक एट दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें कौन सा वेक्टर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, मास इनटू एक्सेलरेशन, वॉल्यूम क्या है, ये मीटर क्यूब इट्स स्केलर। तो याद रखिएगा कि स्केलर है, यानी कहने का अर्थ हुआ कि यह वेक्टर नहीं है। Look at this question. Force is the product of mass into velocity. In fact, according to second law of motion, P is equal to m into f. m मास है, f एक्सेलरेशन है। निश्चित रूप से क्या होगा, राइट रेस्पॉन्स हमारा बी होगा। अब आइए इस क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इस वेक्टर कौन है ये हमें देखना है। अब देखिए हमारा टाइम क्या है, यह है स्केलर है, स्पीड भी क्या है, स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है, वेक्टर क्वांटिटी मात्र क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। Distance traveled by a particle in a definite direction. It has both magnitude and direction. And displacement also obeys the law of factor addition. So the right response is C. Now see this question. If the number representing volume and the surface area of a cube are equal, मतलब क्या हुआ कि अगर हम क्यूब के वॉल्यूम की बात करेंगे तो एल क्यू हो जाएगा, और यदि हम सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 6L² हो जाएगा। अब दोनों सेम है, राइट। मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम देखेंगे ये तो 6L² बाई एल क्यू हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, कट जाएगा। मैंने कहने का अर्थ हुआ कि ये आ जाएगा 6/L, यानी L इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ द एज जो होगा हमारा 6 हो जाएगा। सो राइट रेस्पॉन्स डी हो जाएगा हमारा। रिमेंबर, नाउ कम टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनर्जी ऑफ विंड इज, विंड की ऊर्जा क्या होती है। याद रखिएगा कि विंड क्या है, विंड दैट इज द एयर इन मोशन। विंड इज एयर इन मोशन, और मोशन के साथ जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। यहाँ पर मास क्या है, m क्या है, मास है, और भी हमारा वेलोसिटी है, राइट। इसलिए यहाँ पर ओनली काइनेटिक होगा। दिस इज द राइट रेस्पॉन्स, रिमेंबर। See, in wind power, which form of energy is converted into electric energy? स्वाभाविक है, विंड में क्या है, एयर इन मोशन रहता है ये, तो हमारा वो काइनेटिक एनर्जी रहता है वो विंड में 12 mv², और 12 mv² का कन्वर्सन हो जाता है
एक्टिव एनर्जी में, सो राइट रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एनर्जी, तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। सो राइट रिस्पॉन्स इज ए। सी दिस एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब हुआ कि energy can neither be created nor be destroyed. Of course, one form of energy can go to the other form. That is a transformation from one form of energy into another form is possible. इसलिए right response हमारा क्या हो जाएगा? D हो जाएगा. Energy can neither be created nor destroyed. ये क्वेश्चन देखिए, which of the following energy changes involves फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें कौन कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स इन्वॉल्व होता है देख लीजिए। अब काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, मोर देन ऑन ऑफ द फॉलोइंग। एक्चुअली क्या है आप देखेंगे क्या कि ये राइट रिस्पॉन्स हमारा ए हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। अब आप देखिएगा कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जब मूव करेगा तो क्या होगा, अगर फ्रिक्शन रहेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक पार्ट ऑफ एनर्जी क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा हीट एनर्जी में। सो जो सही रिस्पॉन्स हमारा होगा वो ए है। अब इसको देखते हैं हम लोग। मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट stored solar energy. Which of the following is not ultimately derived from the sun's energy? अब सूर्य के ऊर्जा से कौन ड्राइव नहीं होता है हमें देखना है, राइट। जैसे हमारा अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो इसका ओरिजिन क्या है, न्यूक्लियस है, ओके। और यदि हम ये बायो एनर्जी की बात करेंगे तो इसका सोर्स जो है बायोमास है। विंड एनर्जी की बात करते हैं बायोमास है। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन, इज नॉट अल्टीमेटली ड्राइव फ्रॉम दी सन, सूर्य से कौन सा ड्राइव नहीं होता, तो ये तो नहीं ड्राइव होता है, बी भी नहीं ड्राइव होता है, ये ड्राइव होगा सूर्य से विंड एनर्जी एंड हमारा बायोमास। इसलिए राइट रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, ए एंड बी। See this one, match list with list 2 and choose the correct answer from the code given below. अब हम इसमें देखेंगे हम लोग कि एनर्जी कन्वर्शन है और ये डिवाइस है, मैकेनिज्म है। जैसे लाइट एनर्जी को अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है, दूसरा क्या है इलेक्ट्रिक टू साउंड है, तीसरा क्या है मास टू हीट है, और तीसरा क्या है केमिकल टू हीट एंड लाइट, और हमें करेक्टली मैच करना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो क्या है सोलर सेल है, राइट। फिर इलेक्ट्रिक टू साउंड कन्वर्ट करना है तो दिस इज लाउड स्पीकर, राइट। और यदि मास टू हीट कन्वर्ट करना है कार ब्रेकिंग, और केमिकल टू हीट एंड लाइट करना है दिस इज केमिकल टू हीट एंड लाइट। एक बच गया ना, फ्यूल कंबस्टिंग, चूंकि आप देखेंगे क्या है उसमें आपका लाइट भी जलता है, फिर हमारा जो है right match this one, yes, this is correct, this is correct, okay, this is how you can match. Now see the question,
As the train starts moving, the head of the passenger sitting inside leans backward because of क्यों होता है ये? अब देखिए जब बस में आप बैठे होते हैं, as the train starts moving, ठीक है, जब ट्रेन चलना शुरू करता है, the head of the passenger sitting inside leans backward. क्यों हेड जो होता है पीछे की ओर हो जाता है? देखिए एक्चुअली क्या है कि जब ट्रेन रुकी होती है तो ट्रेन के साथ जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं ट्रेन की सीट पे, तो पूरा बॉडी आपका इनर्शिया में रहता है, राइट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहता है। नहीं, जो ही ट्रेन चलती है तो आपके बॉडी का निचला भाग जो आप बैठे हैं सीट पे वो इनर्शिया ऑफ मोशन में हो जाता है, लेकिन आपका शरीर का ऊपरी भाग क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रहता है। ये न्यूटन गति का पहला नियम है, इसलिए आप पीछे की ओर आप लिंस बैकवर्ड हो जाता है। सो राइट रेस्पॉन्स इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, इसे देखिए, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड? स्पीड को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? ये गैलीलियो है, ये राइट, सबसे पहला व्यक्ति है, हालांकि बाद में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन दिया है। केप्लर्स का क्या है, आपका लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आया। सो याद रखिएगा, ये राइट रेस्पॉन्स हो गया। गैलीलियो वाज द फर्स्ट टू डिफाइन स्पीड। सो नाउ सी दिस, a bus is moving along a straight path and takes a sharp turn to the right side suddenly. The passengers sitting in the bus will, right? अब क्या होगा? Bent towards right side, no. Fall in the forward direction, no. Bent towards left side, yeah, this is the right option. No, ये तब तो दोनों की बात हो ही नहीं सकती है। तो याद रखिएगा, a bus is moving along a straight path and takes a sharp turn to the right suddenly. The passengers sitting in the bus will bend towards left side. Remember. Newton's first law of motion is known as law of inertia. State question है, इसको याद कर लीजिए। Static science is associated with a situation of rest. Remember. B, right response. So that's all for the session. Thank you.